यो तो अभी जो पहले की कवरेज है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बेसिकली यार ज़िंदगी में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। इवन अच्छा मौसम भी आता है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। अब कल हल्की फुल्की फ्लरीज होंगी, उसके बाद परसों एक स्टॉर्म आ रहा है। नॉर्मली ये होता है कि गाड़ियाँ, एक गाड़ी अंदर होती है एक गाड़ी बाहर होती है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन जब बड़ा स्टॉर्म होता है तो बड़ी गाड़ियों की कोशिश ये होती है कि भाई वो अंदर ही खड़ी हों, वरना फिर सफाई करना एक मसला हो जाता है, क्योंकि चलती भी ज़्यादा वही हैं ऐसी कंडीशंस में। और उसमें फिर ये होता है कि मतलब टेम्परेचर अगर ऊपर ना जाए तो फिर वो आइस बन जाती है, फिर वो एक और मसला। तो वो जो तगोदौ होती है हर दफ़ा, क्योंकि अब आप महीनों इसी तरह रखते हैं। हालांकि देसियों का सबसे बड़ा एक और मसला यह है कि किसी भी देसी घर में आप जाइए तो गैराज में या तो कपड़े सूख रहे होंगे या मशीनें रखी हुई होंगी या सामान रखा हुआ होगा, इस तरह की चीज़ें, और गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं। मेरा हमेशा यही होता है कि भाई गैराज को गैराज की तरह यूज़ किया जाए, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर अगर फिट हो सकता तो ठीक है। तो लेकिन अब ज़ाहिर है मोटरसाइकिलों की वजह से कि बार बार उनको निकालने और उसके लिए तकलीफ़ होती है। अगर गाड़ी भी खड़ी हो फिर पहले गाड़ी निकालो फिर वो, तो मैं बड़ी गाड़ी एक बाहर ही खड़ी कर देता हूँ। और जनरली इसी तरह चल रहा था महीनों से। लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि यार वो भी अंदर लेकर आए। ज़ाहिर है कि सफाई वफाई भी काफ़ी करनी पड़ी गराज की। उसके बाद फिर जो तगोदौ थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो होपफुली अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे दो चैनल हैं, एक है देसी एंथुजियास्ट जो कि इंग्लिश फोकस था ज़्यादातर, उसमें भी बायलिंगुअल की कुछ चीज़ें, लेकिन ये कि वो ज़्यादातर अपने हॉबीज़ की तरफ, अपने टेक्निकल वीडियोस जो मैं बनाता था उसकी तरफ, या फिर ये कि अपना मोटरसाइकिल गाड़ियाँ उनके रिव्यूज़ ये वो उसके लिए था। लेकिन ये चैनल इसीलिए फोकस करके अब शुरू किया है, और इसका नाम अब मैंने सोच लिया भाई हाइब्रिड देसीज़, कि हम ना इधर के हैं ना उधर के। तो देखते हैं, इसको लेके आप लोगों के साथ चलते हैं। इसमें कुछ मज़े की बातें भी करेंगे, इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे हर ताल्लुक़ से, जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं देसियों के, जनरल जो इश्यूज़ हैं हमारे, या हमारे जो ओवरऑल जो मालूमाती तौर पे जो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं चीज़ें, वो भी कर लेंगे। तो इसको मगर आगे बढ़ाने में सपोर्ट की ज़रूरत होगी ज़ाहिर है। तो आप लोग देखिए, अगर पसंद आता है मटेरियल तो अब आहिस्ता आहिस्ता नया चैनल शुरू करना भाई एक आदमी जो फुल टाइम इसे नहीं करता उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे खुद मज़ा आता है इस तरह इंटरेक्ट करने में। तो मेन मकसद यही है इसका। और आप लोग भी अपनी फ़ीडबैक दीजिए, जहाँ जो चीज़ इम्प्रूव करनी है वो करें। कुछ इश्यूज़ होते हैं जैसे आज का मैं शेयर करूँगा, क्या मुश्किलात हो सकती हैं। कोई मुश्किल नहीं है ये, लेकिन ये कि एक चीज़ है कि आप अगर अंदर खड़ी कर देंगे गाड़ी तो आपको बाद में आसानी हो जाएगी। लेकिन अंदर खड़ी करने के लिए आपको अगर मुस्तकिल नहीं कर रहे हैं आप वो, तो फिर क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं अक्सर। और अब जब ये स्टॉर्म आ जाएगा, अब पता नहीं कितनी पड़ती है बर्फ़। अक्सर तो ये होता है कि 1 फुट 10 इंच 12 इंच 15 इंच इसकी वो करते हैं और फिर आता कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर आ गया तो फिर ये जो सफाई वफाई का जो सिलसिला होता है वो फिर आप देखिएगा। तो कहने का मकसद क्या था, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, अपना कोई बुखार भी नहीं देता। Obviously it is brutally cold today and hopefully we can get that going. Huh? It's not that cold. It's just like 30, For an old man 40 like me, degrees. yeah, it is cold. It's almost at the below freezing mark. अच्छा वो कहाँ है? ब्रूम लो। एक तो जब बच्चे बड़े हो जाएं तो ऐसा करते जैसे कि माँ बाप तो कभी बच्चे थे ही नहीं भाई, उनको कुछ नहीं पता। चलो खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बिग हेल्प। उनके बड़े भाई तो गए हुए हैं जॉब पे, तो बट ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प माशाल्लाह। चलो इसको उठाओ, ब्रिंग द dustpan closer. तो बड़े जो हैं, you have to wear the gloves and pick them up one by one, क्योंकि वैसे नहीं जाएगा। Okay, so first we'll park this one on the side. कहने को ये छोटी है लेकिन this is humongous itself.
So that's where the center stand comes in handy. A lot of people argue about it, and in situations like that it could be a blessing. So all right, so now we're going to put it on the center stand. The thing about this one is that it lifts up, so you can easily do that, and then move around a little bit if you want. All right, so this is good. And now this beast. This one does not have any stand assist, but there's a trick. It's almost 800-pound bike, and in this you just put your foot on the stand, and then just put your weight on the foot, and don't try to lift it up. Now with the center stand, as I've mentioned before in several videos, now you can just slide it. The center stand sliding will do. I think this is good enough. Let's bring up the big one. Let's bring up the big one, huh? Desi, now you do the Jaguar. इनको बड़ा शौक है, माशाल्लाह. Does a good job. Because this is a little bit tricky. Move that out of the way. Going back in, but if you're gonna stay outside for a little bit, then you feel. There's still more space. But is it clear over there? Then let's just leave some space there. Chalo. Okay. So now it seems fine. ठीक है, good. That's good. चले दोस्तों, फिर बताइए कैसा लगा. क्लियरेंस है और जो के है बेहतरीन. So hopefully you enjoy the video. If you do, please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.